Hello students, good morning. I hope you all are fine and doing well at your home. Today in this video we are going to discuss second chapter of geography, that is chapter number 10, spheres of the earth. Okay, what is spheres? So spheres means areas, or you can say portion, areas or portion. So we have to learn about areas or portion of the earth. In the previous chapter we have already discussed about the habitant and revolution, rotation and even solar system. Now so in this video we are going to discuss spheres of the earth. So first of all, spheres, I already told to you, spheres means area or portion of the earth. So our earth is a unique in the solar family. Unique means different. So it is totally different than the other members of the solar family. Why it is totally unique or different in the solar family? So the reason is that earth is only one planet in the solar system on which we get the human life. So it is unique in solar family. Earth is only planet which has got favorable temperature, water and life, which is a valuable gift to the earth. Why it is unique or different? So what is the reason behind it? So earth is the only planet, means earth is a single planet which has got favorable temperature. Favorable temperature means proper temperature, water, life, which is valuable gift to the earth. Favorable temperature means the temperature in which the human being can live. Then you know very well that earth is only single planet which is having water, and 71% of the area of the earth is covered with the water. That's why we can call the earth as a blue planet also. Okay, and that is the valuable gift of the earth. Means as far as the earth is concerned, what are the favorable things we get? Okay, so the favorable things are temperature, water and life. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount of the other planet. Evidence means proof. Okay, we don't have any proof till now that on the other planets having sufficient water and oxygen. You know very well that as far as solar system is concerned, total we have 8 planets, and only the earth is a single planet on which we have water and favorable temperature, even oxygen also. So on the other planet means except earth, कोई भी planet ऐसा नहीं है जहाँ पे water और oxygen available है, ऐसे evidences मिले हैं, means ऐसे proof मिले हैं, means we cannot get any single proof on the another planet which are having water and oxygen. Ordinarily we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. Now I think you have learned in the science also that as far as the birth of the earth is concerned, मतलब जब earth है वो जनरेट हुई और उसका बर्थ हुआ तो it was like a fireball. वो एक क्या थी? एक fireball थी. Okay, on its time of origin means at the time of origin the earth was like a fireball. जो earth थी वो क्या थी? एक fireball की तरह थी. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively like liquid and solid. Now what happened? This fireball means the earth cooled down slowly. धीरे 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 करके वो क्या होती गई? कूल होती गई, ठंडी होती गई. And it later transformed. Transformed होना मतलब changed होना. किस में changed हुआ? So many matters respectively like liquid and solid. तो उसमें से liquid भी forms हुए and solid भी form हुए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइस है, ओके, क्यूब ऑफ आइस, सो दैट इज इन अ सॉलिड फॉर्म. फिर धीरे धीरे बाहर टेम्परेचर में आप लोग रखोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो मेल्ट होके उसमें से क्या बनेगा? लिक्विड फॉर्म बनेगा. और एल्स वी कैन से यू हैव वाटर, एंड इफ यू पुट दैट वाटर इन द डीप फ्रीजर, okay, means you set the temperature properly, then what happened? That liquid will change into the ice cube. So the same thing, जो फायरबॉल थी अर्थ वो धीरे धीरे करके क्या होती गई? लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हुई. इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज द रीज़न कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एंड जो गैसेस है वो
वो क्या हुए, कम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस होना मतलब अस्तित्व में आना। तो जो भी गैसेस है अराउंड द अर्थ सरफेस वो एग्जिस्टेंस में आए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि पहले जो ओरिजिन हुआ अर्थ का तब वो एक फायर बॉल थी, फिर धीरे धीरे करके वो कूल डाउन होती गई और उसमें से लिक्विड और सॉलिड फॉर्म हुए, और धीरे धीरे करके उसमें से जो गैसेस है वो भी फॉर्म हुए। सो लिक्विड्स आर कंसिडर्ड विद द गैस। सो व्हाट आर द सॉलिड्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, दे ऑल आर कंसिडर्ड इन द सॉलिड फॉर्म। देन huge ditches on the sphere were filled with the water and turned into the ocean. Now ditches means जो खड्डे होते हैं वो, और spheres मतलब जो भी एरियाज़ है वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े खड्डे थे वो किससे फील्ड हुए, सो दे फील्ड विद द वाटर। और वो जो ditches थे वो कैसे फिल हो गए, तो वाटर से फिल हो गए। तो दिस डिचेज आर फिल्ड विद द वाटर एंड टर्न्ड इनटू द ओशन, और धीरे धीरे उसमें से क्या मतलब जनरेट हुआ ओशन। दस द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ वॉज क्रिएटेड एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो अर्थ है उसके बाहर के जो स्पीयर्स है वो जनरेट हुए। Now from here it's very important, spheres of the earth means areas, portions or layers of the earth. So there are main four spheres of the earth. Which are they? So lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So from here the question will be there in your exam, that write the main four spheres of the earth. So how many main spheres are there? So there are four main spheres of the earth. Which are they? So lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And we'll have to learn all these spheres in detail. Okay, which four spheres are there? So lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So first of all we will discuss about lithosphere. So the upper layer of the earth's surface is generally made of soil and solid metals. Means you know very well, earth surface means land, जो हम वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वो. So that is generally made up of soil. वो किससे बना है? So soil and solid metals. So from here also the question is there, that the upper layer of the earth is made up of which things? So the upper layer of the earth, upper मतलब ऊपर का जो layer है अर्थ का, वो कौन से चीज़ों से बना है? So it is made up of soil and solid metals. So lithosphere, so two words are there, litho and sphere. So what is the meaning of litho? So litho means soil. Okay, what is the meaning of litho? So litho means soil. That is why upper layer of the earth is known as lithosphere. So from here also the question is there, why the upper layer of the earth is known as lithosphere? So litho means soil and the upper layer of the earth is made with the soil. That's why the upper layer of the earth is known as lithosphere. As this layer is also made up of rocks and solid metals, it is known as the rock sphere or the solid sphere. So it is also very important. Not only it is a part of soil, but the upper layer means this layer is also made up of rocks and solid metals. वो soil से तो बना ही है, प्लस कौन कौन सी चीज़ें हैं? सो रॉक्स एंड सॉलिड मेटल्स, एंड रॉक्स एंड सॉलिड मेटल्स आर देयर. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द रॉक स्फीयर और वी कैन से द सॉलिड स्फीयर. राइट, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, लिथोस्फीयर मीन्स which layer? So the upper layer, and it is made up of soil and solid metals. Not only soil, but it is also made with the rocks and solid metals. It is made with the rocks, that's why it is known as the rock sphere, and even it is made with solid metals, that's why it is called solid sphere. And what is the meaning of litho? So litho means soil. Okay, so you have to remember this. Now the area and formation, because you know very well from the earth till the एटमोसफियर जहाँ तक स्प्रेड हुआ है, स्पेस की बात करें तो वो जो एरिया है वहाँ पे अलग अलग स्पीयर्स जो है ओके वो सिचुएटेड है. सो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस फ्रॉम द बॉटम, तो फर्स्ट लेयर कौन सा आएगा? लिथोस्फियर. सो इट्स एरिया एंड फॉर्मेशन, which is the area and how it formed, that we have to see. So upper layer of the earth crust is approximately 64 to 100 km thick. So what is crust?
सो द क्रस्ट मीन्स अपर लेयर. सो जो और लेयर वी कैन से जो अपर लेयर है अर्थ का और वी कैन से क्रस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक है. मीन्स द thickness of the lithosphere is 60 to 100 kilometer, 64 to 100 kilometer. So you have to remember the like thickness of all the layers. Okay, so upper layer or we can say the earth crust or lithosphere is approximately 64 to 100 kilometer thick. Light metals like aluminium and silica are mainly found in that. So which are the metals we can see here in lithosphere? So aluminium and silica. Silica means sand. We can found here in this lithosphere. This layer is thin in the deep sea. Means when you are going downside और जब आप डीप में जाओगे सी में तो वो क्या होता जाएगा, थीन होता जाएगा. Okay, lithosphere occupies about 29% of the earth's surface. So you have to remember these also, that which sphere contains how much part of the earth. So here lithosphere occupies about 29% of the earth's surface. Mountains, plateaus and plains etc. are there on this part of land. So from here also the question is there. Suppose that mountains are the part of which area or which sphere? So your answer is lithosphere. So mountains, then plateaus. Now you know very well, plateaus means this way. Okay, from bottom it is flat but upper side also flat, so you can see here. So bottom flat, again it's like rising, then again flat. So this is the plateau. And plains matlab open ground. So these all are the part of the land. As we go into the depth of the lithosphere, the temperature increasing gradually. So what you have to remember, as we go into the depth, मतलब जब हम लोग डीप में जाएंगे लिथोस्फीयर में, मतलब लैंड के नीचे जाएंगे, सो द टेम्परेचर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे 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 करके वो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ऑन मूविंग टवर्ड्स द डेप्थ, जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेज. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोग डेप्थ में जाओगे लिथोस्फीयर के, मतलब लैंड के नीचे जाओगे, तो पर किलोमीटर एज यू ट्रैवल्ड पर किलोमीटर, सो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस. मतलब पर किलोमीटर कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 30 डिग्री सेल्सियस. इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू द intensive heat and turn into the semi-liquid form. This melted liquid is called magma. So that is also very important. Internal rocks मतलब जो लैंड के नीचे रॉक्स है वो मेल्ट होते हैं, मतलब पिघलते हैं. What is the reason? Because we have already discussed that as we go in the depth, okay, so the temperature increases and per kilometer 30 degrees Celsius temperature increases. So that is the reason, because of intensive heat means too much heat, what happened, that rocks turn into the semi-liquid form, not proper liquid. It's semi-liquid, means little bit thick than the liquid, and this molten liquid is called magma. So from here also the question is that what is magma? So the like we can say internal stock turn into the semi-liquid form due to the intensive heat. So this molten liquid is called magma. And magma, you know very well, it is connected with volcano. आपने कभी सुना होगा या साइंस में पढ़ा होगा कि ये जो लैंड फॉर्म होता है उसके नीचे बहुत सारी हीट होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर होने की वजह से ये जो लैंड है वो कभी कभी उसमें क्रैक्स हो जाती है और उसमें से क्या होता है, लिक्विड जो होता है, हॉट लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मैग्मा, इट विल कम आउट. तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस. हियर हाई प्रेशर एंड अपर रॉक इज ऑब्जर्व्ड. So here definitely I told you that it's very like उसका जो प्रेशर होता है that is very high. For example प्रेशर कुकर, हम लोग जब खाना पकाते हैं प्रेशर कुकर में तो उसके अंदर प्रेशर होता है, तो अगर उसके ऊपर जो विसल होती है वो विसल नहीं होती तो क्या होता कि जो भी अंदर प्रेशर है it will not come out and may be possible that it will break out. तो जो विसल होती है उसमें से क्या होता है, जो प्रेशर है वो बाहर निकलता है. सो फ्रॉम हियर द सेम थिंग इज दैट
This the balance is maintained between the two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. इसलिए ये जो burst है वो सडनली बाहर आता नहीं है, बाकी तो हर जगह पे हमें वॉल्केनो देखने के लिए मिलता. व्हाट इज़ द रीज़न कि जो टू अपोजिट फोर्सेस है, एक तो हमने देखा कि जो हीट है वो इंटेंसिव हीट है, मतलब टू मच हीट, एंड प्रेशर, जो भी ये मैग्मा है वो बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, प्रेशर करेगा. तो दोनों अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो वो मेंटेन रखते हैं, एंड दैट्स वाई द अर्थ क्रस्ट डज नॉट ब्रस्ट. और जो मतलब बाहर का लेयर है अर्थ का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लैंड, वो बाहर टूटता नहीं है, सडनली इट विल नॉट कम आउट. दैट इज द रीजन. द लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद द बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन. Our home, water, farming, industry, all are closely associated with this lithosphere. You know very well that outer, we can say the upper layer, okay, that is the soil. और जहाँ पे हम लोग हमारा घर है, water, even we can say we are doing farming and the industries are built over there. Minerals and crude oil is obtained from the lithosphere. So that is also very important. Lithosphere में से मतलब जब हम सॉइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मिनरल्स, मतलब आयरन ऑर्स, ओके, एल्यूमिनियम ऑर. सो वी कैन गेट दैट ऑर्स, और वी कैन से वी गेट द क्रूड ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल दैट इज बेसिकली नॉट इन अ प्योर फॉर्म, फिर उसके ऊपर साइंटिफिक प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल एंड ऑल द थिंग्स विल गेट सेपरेट. So that is the crude oil. Various crops like obtained through the farming, various industries and other economic activities are performed in the plain region. You know very well that as far as the farming is concerned, so we are doing on the lithosphere, right? And we are getting various crops and even various industries. So many industries are there, iron industry, and we have the different industries and even economic activities. Like जो फार्मिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, ऑल द थिंग्स आर हैपन इन द प्लेन रीजन, और वी कैन से लिथोस्फीयर. फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन रीजन इज इनडेप्थ टू द लिथोस्फीयर. इनडेप्थ होना मतलब थैंकफुल होना, ओके, इट इज़ द न्यू वर्ड फॉर यू. थैंकफुल होना मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट माउंटेन, देन प्लेट्यूज एंड इवन प्लेन्स, forest, all are like the part of lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. So in short we can say that the pillar matlab main base from food to dwelling. Dwelling means home. Okay, what is the meaning of dwelling? So the meaning of dwelling is home. So from the food to home, these are it is the pillar, or we can say base form, and that's why we can live here, or we can say our existence means lithosphere. हमारा जो अस्तित्व है वो कौन है, lithosphere है. So that is very important. Now the second one is hydrosphere. So it is also very important. What is hydrosphere? So see, the proportion of water means the percentage of water area is more on the earth than the land area. I already told to you that nearby 71% of the earth is covered with the water. So how many percentage is left? Only 29% are remain. So these 29% contains of land. Okay, area of the earth's surface occupied the water is known as hydrosphere. So from here also the question is there that what is the hydrosphere? So area of the earth surface occupied by water, जो अर्थ का सरफेस जिसको वाटर ने ऑक्यूपाइड किया है, मतलब रिजर्व किया है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. Approximately 71% of the total earth surface is covered with the water. So that is also very important. Around 71% of the total earth surface means if we are talking about 100%, so from 100% 71% is like covered with the water. This area of the earth surface is so vast that contains appear as if Ireland. Okay, और जो 71% है, it is not a small amount, it is like we can say vast, मतलब huge, and that's why it is appear like an Ireland. तो हमारा जो 21% है, it is look which is 29% which is having land, तो वो एक आयरलैंड जैसा लगता है. आयरलैंड मीन्स what?
like a region which has a 4 side water, मतलब water के बीच में, so that is called island, and that is the reason 71% of water is the reason that we called the earth as a blue planet. Part of the earth having huge water mass are known as oceans. They are respectively well known as the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. So from here also the question is that write the name of the oceans. So Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. Oceans on the earth are very deep and huge. वो जो है वो बहुत ज़्यादा deep है and huge है. 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम. और उन लोगों की मतलब जो भी ओशंस है उसके नीचे डीप वैलीज है. ओके कितने किलोमीटर तक? सो 10 to 11 किलोमीटर्स तक वहाँ पे क्या है? डीप वैलीज है. वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशन. जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पे है मतलब अपर लेयर में है, वैसे ही वहाँ पे भी है. 97% of the total earth water is found in the oceans and it is saline water. So what is saline? Saline मतलब salty water. Okay, so we have already discussed that nearby 71% of water part of the earth is covered by the water. So from this 71 part, जो 71 part में जो water है उसमें से भी 97% जो है वो क्या है? ओशन में हमें देखने के लिए मिलता है. और ओशन में देखने के लिए मिलता है उसमें वो क्या होता है? सैलाइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर है. मतलब जो भी ओशन का पानी है वो क्या है? सॉल्टी वाटर है. यू नो वेरी वेल वी कैन नॉट एबल टू ड्रिंक दिस सैलाइन वाटर और वी कैन से सॉल्टी वाटर. रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट in the form of ice sheets on the poles and on the other high mountains like Himalayas. So that is also very important, that remaining water means 3% because that 97% is saline water. So these 3% parts of these water is of ice sheets. हमने previous chapter में देखा था कि ये जो earth है ओके उसके ऊपर नॉर्थ पोल एंड नीचे है साउथ पोल. सो दैट इज लाइक नियर अबाउट 9 months दे आर कवर्ड विद द आइस. सो वहाँ पे जो है 3% वो आइस शीट में है. और इवन जो हाई माउंटेन्स है हिमालय जहाँ पे ये जो आइस होता है या स्नो होता है वहाँ पे वो क्या है? 3% वाटर है. एंड 97% इज लाइक सैलाइन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर. द वाटर विच इज लाइंग अंडर द अर्थ क्रस्ट flows in the form of the lake rivers is very less in proportion. और जो underground water है it flows in a form of lake. उसमें से lake बनता है, rivers बनती है. So that is in a large less proportion means that percentage is very less because 3% 2/3 ओके अप्रोक्सीमेटली 2/3 मतलब 3% के भी 2/3 पार्ट है वो तो आइस शीट्स है. ओके और बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा वो लेक एंड रिवर्स है. लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. जो लिविंग क्रिएचर्स हैं एंड प्लांट्स है दे कैन नॉट सर्वाइव मतलब दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो जो वाटर है वो हमें एंड वाटर तो रिक्वायर्ड ही है, देन आफ्टर फूड ऑल्सो एंड इवन मॉइस्चर जो है जो एयर में है. ओके दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर मतलब जो अस्तित्व की बात करें हाइड्रोस्फीयर की तो उसका अस्तित्व इज इक्वल टू हमारा अस्तित्व मतलब लिविंग बीइंग का अस्तित्व. Most of the humidity for the earth's rain came to the ocean. So that you know very well. Humidity मतलब जो भी भेज है और जिसमें से मतलब इवापोरेशन से रेन आता है वो मोस्ट ऑफ कौन सा वाटर होता है? So that is the water of the ocean. At the bottom of the sea there lies a large amount of precious minerals. Okay और bottom मतलब नीचे. sea के bottom में भी क्या होता है? Large precious minerals means we have pearls and all that thing. Salt is obtained from the water and its bottom consists minerals like manganese, iron, tin, etc.
Definitely, we have already discussed that the water is like saline water, and as far as द सॉल्ट इज़ कंसर्न, तो उसके भी बॉटम में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, इट इज़ लाइक मैंगनीज, आयरन, टिन एक्सेट्रा. ओशन इज़ ऑल्सो स्टॉक ऑफ प्रोटीन, रिच फूड फॉर ह्यूमन्स. जो ओशन है वो भी हमारे लिए उसमें से प्रोटीन मिलता है एंड इवन रिच फूड भी मिलता है. देयर इज इननंबरस पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स ऑफ द ओशन. यू नो वेरी वेल, जो टाइड्स होते हैं मतलब मोजे, उसमें से भी करंट जनरेट होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ जो मशीनरी होती है जनरेटर. उससे क्या होता है कि उसमें से करंट जनरेट होकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. बाय इट्स मैनेजमेंट यूजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन, ओके, एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट ऑल्सो. द ओशंस हैव डेवलप्ड एज waterways. Waterways also more favorable in the trade in the different countries, and not only like that, but even we have the development of waterways also we can see. और waterways develop होने की वजह से क्या हुआ है, we can easily travel in the different countries. not only traveling but जो transportation है goods का, वो भी एक place से दूसरे place पे send किया जाता है. So I hope it is clear to you. So in this video we have discussed about lithosphere and hydrosphere. In the upcoming video we will discuss about atmosphere and biosphere. Thank you for watching the video. Have a nice day.